Hey hi, Railway Recruitment Board RRB has released a short notice for Group D Recruitment 2025. Apply online starts from 23rd of January 2025. In this recruitment, 32,000 plus vacancies or posts. Let's know the full details about this recruitment. Myself Alok Singh Rajput and welcome you to Plutoizic. So students, let's begin this video. So here we are guys, let's know the vacancy details. So the total number of vacant seats are 32,000 plus vacancies. So the first post name is Pointsman B and department is traffic. Total number of vacant seats are 5,058. Second post name is assistant track machine, department engineering, and total number of posts 799. Third one is assistant bridge engineering, 301 seats. फोर्थ वन इज ट्रैक मेंटेनर GRIV और उसके बाद डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग 13,187. नेक्स्ट असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग 257. असिस्टेंट CNW मैकेनिकल और इसमें टोटल वैकेंसीज है 2,587. नेक्स्ट असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल 1,381. नेक्स्ट असिस्टेंट SNT डिपार्टमेंट भी SNT इसका है एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 2012. नेक्स्ट असिस्टेंट लोगो सील डिजाइन मैकेनिकल और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 420. नेक्स्ट है असिस्टेंट लोगो सेल इलेक्ट्रिकल और इसका डिपार्टमेंट भी इलेक्ट्रिकल है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आर 950. नेक्स्ट असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 744. नेक्स्ट असिस्टेंट LTL एंड AC, so department will be electrical. Total number of vacant seats are 1,041. assistant L&T is और workshop, so electrical इसका डिपार्टमेंट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आर 624. नेक्स्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स आर 3,077. सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी डिटेल्स टू फिल अप दिस फॉर्म. बेसिकली आपको 10th पास आउट होना चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 वर्ष के व्यक्ति या महिला ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 23rd of January 2025 से और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एंड फी पेमेंट आर द सेम. द डेट विल बी 22nd of February 2025. बात करें अप्लीकेशन फी की तो जनरल OBC और EWS को 500 रुपये, ST SC को 250 रुपये और ऑल फीमेल्स 250 रुपये. आगे बात करते हैं रिफंड रूल्स की तो जनरल और OBC को 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे CPT में अपेयर होने के बाद. ठीक है. ST SC और EXM PWD को 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे, उनको भी CBT अपेयर होने के बाद रिफंड होगा. ठीक है. और सेम रूल महिलाओं के लिए भी है. So students, I hope you get it. See you soon in another new video. Thanks for watching guys. Bye.